Okay. So, ज्योति विजिबल देखते पाচ্ছিস? हाँ सर। तुमको भी दिख रहा है ना? So, ecological succession is a constant change which takes place, and this is a very important topic which is going to come in your exams. मुझे पता चल गया है किसी भी तरह से. So what is it? It is the observed process of. एक second. ये कभी कभार इसमें प्रॉब्लम आ जाता है. लाइनक्स से विंडोज में एक সেকেন্ড জ্যোতি, এটা প্রত্যেকটা পেজে দেখে নিচ্ছি. लाइनक्स से विंडोज जब भी मैं करता हूँ ना, ये प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा. ये मेरा लाइनक्स सिस्टम है, ये विंडोज है. এক সেকেন্ড, এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি. লাইনক্স থেকে উইন্ডোজে যেই এনেছি না, একটু প্রবলেম হচ্ছে. মানে লোডশেডিং. কারেন্ট এসে গেছে. আসবে তো, নাকি সিকান্দারকে আবার ডাকতে হবে? हाँ, ये अब ठीक से आ रहा है. फाइनल स्टेज, ये सब चीज चला जाता है. इट इज नॉट डिस्टर्ब.
undesirable rush. ওকে, ক্লিয়ার করেছি। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হুম। So, ecological succession is the observed process of change in the species structure of an ecological community over a period of time. So, over a period of time, the types of species that changes. Naked land, in that land you have uh, organisms, they are changing. पहले you have a first set of organisms coming, grasses, उसके बाद shrubs, then you have trees. So it changes over a period of time. So ecological succession, this is known as succession. So ecosystems, they are constantly changing, and their ecological succession is a gradual process of change and replacement of the type of species in a community. Each new community makes it harder for the previous community to survive. So a new species comes. हाँ, सेकंड जो आता है पहले स्पीशीज को मुश्किल कर देता है और भी बचने के लिए आसान नहीं कर देता है। ग्रासेस कम, उसके साथ साथ ग्रास के साथ साथ रैबिट्स भी आ जाएंगे, माइस गाय भी आ जाएंगे, सब ग्रास को खा लेंगे, मुश्किल कर देता है ग्रास को। ठीक है ना? सो ग्रेजुअली ग्रास को छोड़ के सम बिगर ट्रीज विल स्टार्ट टू कम। फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट यू विल नेवर सी ग्रास। कभी कोई फॉरेस्ट में गए हो, घास देखे हो? तो पेड़ देखोगे, तुम घास देखे हो नीचे? नहीं देखोगे। वो ग्रास तुमको खुला ग्रासलैंड में मिलेगा, यू गेट ग्रास इन द ग्रासलैंड। हाँ, सो करंट अगेन। So grass will only be found in places where there is a grassland. क्योंकि वो ग्रास चला गया, अभी ट्रीज आ गया, लेकिन पहले इट वाज अ ब्लैंक स्पेस, लेकिन देयर केम ग्रास। So it can be defined as the progressive change in the species composition of an ecosystem. That is how you will define ecological succession. धीरे धीरे धीरे, one step by step change. Species composition. What is species composition? At one time you have XYZ species living first. Then XYZ species is replaced by the next set of species, ABC. Then ABC is replaced by CDI, EFG. That is replaced by HIS. And finally, you come to a climax community, the final stage. Species जो रहते हैं forest में, what you see is a climax community. So there are two main types of ecological succession. The first one is primary succession. It is the process of creating life in an area where no life existed earlier. So first you had rocks, no life. Then suddenly the small shrubs, grass came. Then shrubs came. Bigger trees came, and then finally you have the forest coming. So an example of an area in which a community has never lived before would be a new lava or rock from a volcano that makes a new island. हाँ, एकदम ब्लैंक है, लावा रॉक, एक वॉल्केनो हुआ है, हाँ गर्म था फिर ठंडा हुआ, देन कुछ नहीं है, ब्लैंक है, फिर वहां पे ग्रेजुअली ये सब श्रब्स, ये सब चीज आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूडेशन। पूरा बेयर लैंड बन है, दैट इज न्यूडेशन। अच्छा,
फिर प्राइमरी सक्सेशन इट बिगिंस इन अ प्लेस विदाउट एनी सॉइल, वहां पे कोई सॉइल नहीं है। लाइक स्लाइड्स साइड्स ऑफ अ वॉल्केनो, वॉल्केनो जब हुआ निकला है, लावा वॉल्केनो है, निकला है, तो साइड, उसके साइड ब्लैंक हो गया। फिर यू हैव लैंडस्लाइड, धौस पड़लो, मतलब पहाड़ से पत्थर जो गिर जाता है, लैंडस्लाइड उसे कहते हैं। फ्लडिंग, सब मर जाता है। हाँ, सो फिर वहां से इट स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज लाइकेंस that do not need a soil to survive. Lichens होता है, तो I'll show you what lichens are. हाँ, क्या lichens? हाँ हाँ हाँ, वो मॉस नहीं है, वो थोड़ा सा और भी स्प्रेड होता है लाइकेंस। हाँ, लाइकेंस मैं फोटो भेज दूंगा लाइकेंस का। ठीक है, दे आर नोन एज पायोनियर स्पीशीज। ये लाइकेंस आ गया यहाँ पे। ये जो व्हाइट व्हाइट के पास में जो, ये नहीं है, लेकिन ये साइड में जो दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट एरियाज, ये सब चीज लाइकेंस होता है, सफेद सफेद, ये लिविंग है। फिर उसके ऊपर मॉस आता है। When lichens die, they decompose, adding small amounts of organic matter to make soil. Simple plants like mosses and ferns can grow on this new soil. तो ये लाइकेंस मर गया और सफेद सफेद चीज मर गया, ये सादा सादा मर गया, एंड ये मॉस एंड ये फर्न्स आना चालू किया। नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। फिर द सिंपल प्लांट्स लाई एडिंग मोर ऑर्गेनिक मटेरियल, द सॉइल लेयर थिकन्स एंड grasses and other plants take over. मर गया, फिर ग्रास एंड अदर प्लांट्स आना चालू कर दिया। Then they die and add more nutrients to the soil. Shrubs, trees can survive on this soil. छोटा छोटा पेड़ और shrubs, ये सब चीज आना चालू हो गया, ऐसे बन गया। এরকম হয়ে গেল জ্যোতি, দেখতে পাচ্ছিস জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। देन उसके बाद इंसेक्ट, स्मॉल बर्ड्स, मैमल्स, ये लोग अंदर आ गया घास के अंदर। What was earlier only a bare rock now supports a variety of life. So gradually one, step two, step three, step four, step five करके final ऐसे आ गया तुम्हारा। This is primary succession. Bare soil, grasses, shrubs, trees, large trees. ये भी सेम चीज ही है। अब ना सर, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? It is the process of restabilization that follows a disturbance in an area where life has formed an ecosystem. बना है, लेकिन आग लग गया, कुछ हो गया, काट दिया, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, उसको फिर करके छोड़ दिया, फिर वहां पे जंगल बनना है। दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। दिस सेकेंडरी सक्सेशन occurs on surface where an ecosystem has previously existed. पहले वहां पे था इकोसिस्टम। It is the process in which one community replaces another community which has been partially or totally destroyed. Might be by natural processes such as floods or earthquakes. So जो final species structure था in that secondary succession area, what was the final structure? That is destroyed. So another type of community comes in. But there was an ecosystem. Bare land नहीं था वहां पे, destroy हो गया था। फिर बीच में देखो, थोड़ा सा बेयर लैंड आ गया, ये सब चीज आना चालू कर गया। ये देखो, पेड़ के बीच में कुछ काट दिया, तो यहाँ पे चेंज हो गया, तो फिर से ग्रास वास यहाँ पे चालू हो गया, ऐसा चालू हो गया। When an existing community has been cleared by any type of disturbance such as fire, cyclone, etc., and the soil remains intact, the area begins to return to its natural community. Because these habitats previously supported life, secondary succession begins. So
पहले हो गया डिस्टरबेंस, ग्रासेस, श्रब, स्मॉल ट्री, फिर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट, फिर डिस्टरबेंस हो गया, फाका हो गया वहां पे, फिर ग्रासेस. सो दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ. Why does ecological succession occur? Because it is the process of life for plants and other living organisms. Because organisms alter soil structure and the species community constantly change over a period of time. So succession will continue until the environment reaches its final stage, that is the climax community. ये चलता ही रहेगा, finally climax community आता है, that is the final. पहला community which has come, that is known as pioneer community, and end में जो आता है, that is the climax community. So bare rock, lichens, mosses, herbs, grasses, shrubs, फिर oaks. Finally ये this is the climax community. Pioneer से climax community has come. Till climax community has come. So what is a climax community? A climax community is a mature, stable community that is the final stage of ecological succession. Cacti in the desert or grasses in the fields. Grassland में grass हो गया last. और forest में trees. ये सब climax community है. Cold desert, hot desert, arid desert, mountain, forest, climax community. यहाँ पे घास नहीं मिलेगा. You will not find grass. Physical factors. There are two main physical factors that determine the nature of the community that develops in an area. Their temperature and amount of rainfall. बहुत गर्म नहीं है, बहुत ठंडा नहीं है, and sufficient moisture मिलेगा. Threats to succession. Weeds. आगाछा गुलो मतलब सब उल्टा सीधा पे जो प्लांट्स निकल आता है. हाँ, वो that is and then subsequent growth of shrubs are considered undesirable. उसे कहते हैं बी रश, ब्रश. श्रब्स आ गया तो सक्सेशन को रोक देता है. But without these intermediate stages, the disturbed habitat can't return to the forest. तो अगर ये कैटास्ट्रॉफी नहीं हुआ तो ये चीज वापस नहीं आ सकता. अगर क्लाइमैक्स है, ক্লাইম্যাক্স ই रहेगा. যদি ক্লাইম্যাক্সটা থাকে ক্লাইম্যাক্সই থাকবে. হ্যাঁ, ক্যাটাস্ট্রফি হলেই তবেই আবার প্রথম দিকে আসবে. ये दिस इज द एंड ऑफ दिस. कोई एक क्वेश्चन আছে? ना सर. तुमको कुछ समझना है? ओके, एक चीज और मैं पढ़ा देता हूँ. क्या कैटास्ट्रॉफी? हाँ, डिस्टर्ब, आग लग गया, वो अर्थक्वेक हो गया, वो खराब हो गया, फिर से वापस पहले वो वाला स्टेज में आ जाएगा. दिस इज सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन एकदम बेयर लैंड है, कुछ नहीं था, उसमें से चालू हुआ पहला वाला. सेकेंडरी में वो था बट समथिंग डिस्ट्रॉयड इट, फिर से प्राइमरी जैसे चालू हो गया. एक छोटा लिंडनमैन मॉडल को थोड़ा सा दिखा देता हूँ आज. करेक्ट. अरे अमेजन प्राइम नहीं. दिमाग मेरा खराब हो गया. एक सेकेंड ना. मुझे विंडोज एकदम पसंद नहीं है, मुझे लाइनेक्स पसंद है. वो देख नहीं पाएगी ना. उसमें ही लगा सकता था मैं. उसमें ये हेडफोन चाहिए होगा बोलने के लिए, सुनने के लिए. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम.
ये डाउनलोड कहाँ हुआ है? ये देखो यहाँ पे आप। ये चीज तो इजी है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप खोलता हूँ थोड़ा सा। স্যার ইকোলজিক্যাল সাকসেশন আপনি যে নোটসটা পাঠিয়েছেন না ওটা খুলছে না ফোনে। আবার পাঠিয়ে দেবো। স্যার ওটা মনে হয় জিপি ফর্মে আছে ওই জন্য খুলছে না, পিডিএফ ফর্মে নেই। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবো। ওর প্রিন্ট ইয়ে করে নিয়েছে তো, জেরক্স করে নিয়েছে তো। हाँ हाँ, उसमें तो हाँ उसमें तो सक्सेशन होना चाहिए ना। हाँ, কমিউনিটির মধ্যে রয়েছে। হুম হুম হুম। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हाँ नहीं नहीं, वो नेक्स्ट डे पढ़ना है, ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम करवा देंगे आराम से। ऑनलाइन आओ ऑफलाइन आओ कुछ भी आओ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस तैयारी करना चालू कर दो। जो जो नहीं है नहीं है, जो जो मैं लिखाया যে কোশ্চেন্স গুলো দিয়েছি না, হ্যাঁ ওইগুলো স্যার। ওইগুলোই পড়তে শুরু করে দে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আজকে তাহলে এখানেই রাখি। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। और আমি বন্ধ করছি।